magnificent. Yeah, so today's chapter is about magnificent outcome. Many a time it happens na, then we are going for some work or we have something important upcoming, and we are little um, scared, and we are like doubtful, and we want things to go well. So we always keep, we cross our fingers Yes, before doing that. Bachpan yes, se karte hain na, cross your fingers. yes, And somewhere, we are hopeful, that I hope it goes well. You're going for an interview and you're just thinking, hey Bhagwan, mera interview theek ho jaye. Like that. And you're hopeful कि मेरा interview अच्छा हो जाए. Or you are going somewhere, like you have a meeting and you are driving and you see a lot of traffic on the road, and you just keep thinking, I hope I reach in time. So sometimes whenever we are in a situation like this, we are just hoping for things to happen. But today we are going to learn कि वो hope की जरूरत ही नहीं है. We can actually ask the universe to do it for us. Universe तो हमेशा सुन रहा है हमारी. तो वो यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये चाहिए, और मतलब आपने उसको एक्सपीरियंस करना है as if it is already done, and pay gratitude for it, and it will happen the way you want it. How many of you have already experienced this magnificent outcome? yes, I have experienced actually when I had gone for my interview. This was long time back, around 15 years back, when I'd gone for interview to Wipro. Yeah. And I never, that was when I appeared for the interview. I was just waiting for the result, whether I'm selected or I'm not Yeah. selected. So that was going on in my mind. But then when finally I got that I was selected, then no, I was actually waiting outside, and the ambience of the company, like it was, so beautiful, so amazing. I was just in my mind, what if I'm selected? I'm I'm selected here. So it was, like from my heart, I was thinking, yeah, I should be here. Yeah. So without knowing it, without realizing it, you are visualizing as if you're already there and you're Yes, working there and feeling happy about it, right? yes, And you actually practice magnificent outcome unknowingly. तब तो अनोइंगली yes, किया था. अभी तो हमें yes, पता है. पता है, yes. अभी तो हमें पता है. And I want Varun also to share. Varun, आप मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत करते हो ना, so why don't you share? अभी रिसेंटली मेरे को एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहा मैग्निफिसेंट आउटकम का. हाँ, तो रिसेंट नहीं, बट कुछ पहले का. बिकॉज यू कीप शेयरिंग विद मी के मैं कुछ भी करने लगता हूँ तो मैं पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेता हूँ उसका. You shared it with me couple of times. Yes. Don't worry. So if you remember, you can share it. Otherwise, we all know that it works, right? Right. Yeah. So let's revisit it as if we don't know कैसे काम करता है. कहीं ना कहीं भूल गए होंगे ना, कुछ कोई ना कोई स्टेप भूल गए होंगे हम पक्का. तो आज उसको दोबारा से पढ़ते हैं as if we don't know anything about it, and let's understand ये magnificent outcome है क्या और ये कैसे काम करता है, right? So who's going to read? वरुण, आप पढ़ेंगे आज? I need some time to settle. Okay. Almas? Okay, yes, I will read. One second. Almas has become my official reader. Yes. And I'm so happy that we have reached day 21. Yes, And a big round of applause to all of you, people who have been joining every single day. Yeah. And it shows your commitment and your consistency in doing it. And I just wish that uh,
I hope you people are practicing it also. So, like as consistently and as regularly as you are attending it. So Yeah. that is actually going to make a difference in your life. Yes, please start. Day 21. Magnificent outcomes. Magnificent outcomes. Magnificence क्या होता है? What is magnificence? Superb, amazing. Yeah, something which is beautiful, super, you know, we Yes. can use as many superlative for it. Actually speaking, जो Yes. हम चाहते हैं जब वो उससे भी अच्छा होता है, you know, जैसा हम चाहते हैं वो उतना ही खूबसूरत, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं ना, we want things to go right, so we imagine the best of it, right? Yes. And when we achieve that, that is magnificence. Magnificence का मतलब ये भी होता है कि something which is magical, जो आपने सोचा नहीं कि इतना अच्छा सच में हो सकता है और वो हो गया, something which is चमत्कारी. Yeah, that is also, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, जो बहुत खूबसूरत बनी होती है, कहते क्या, what a magnificence creation, बोलते हैं ना Yes. कि जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, उससे भी खूबसूरत बनाया है किसी ने, है ना, उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंस. तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि ये मैग्निफिसेंस आउटकम हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं. हाँ जी, पढ़े. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874-1906, sorry, 1936 writer. Okay, so what is this GK saying is that we usually say, like we have learned now, that before eating we need to say thank you for the food we are eating. But he says कि मैं तो हर चीज के लिए बोलता हूँ थैंक यू, पहले से ही ग्रेस, पहले से ही उसके लिए थैंक यू बोल देता हूँ. ग्रेस, ग्रेस का क्या मतलब होता है? उसकी कृपा, जिसके लिए हम थैंकफुल हो रहे हैं. सो इवन बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग, व्हेन आई डिप, पहले होता था ना, वो एक इंक पॉट होता था, उसमें आप पेन को डिप करते थे, या फिर उसके बाद वो आ गया था, क्या कहते हैं उसको, पेन के अंदर वो होता था, पंप टाइप होता था, उसको हम प्रेस करके उसमें इंक भर लेते थे, और उसके बाद हम वो उससे उस पेन, इंक पेन से लिखते थे. तो शुरू शुरू में जब लोगों ने लिखना शुरू किया तो क्या होता था? आप में से कितने लोगों ने कलम देखी है? कलम दवात किसी पिक्चर में, Yeah, किसी, यू yes. नो, या, सो इट यूज्ड टू बी Earlier अ, people used it. हाँ, it used to be a ink pot, and there used to be a जैसे वो जैसे होता है ना पतले वाले बैम्बूस टाइप के, या झाड़ू होते हैं ना, जो उसके वो जो हॉलो वाला चीज होती है, गोल कान्ना सी. बोलते हैं, कान्ना. हाँ, पंजाबी में काना कहते हैं उसको. तो उसको वो आगे से ना निब की तरह काट लेते थे. It used to be pointed in the front, and you can hold it like a pen, और आगे से वो pointed होता था जैसे कि निब होती है. उसको इंक में डिप करके उससे लिखते थे. लिखा हुआ है हमने. हाँ, मैंने भी लिखा हुआ है, और स्पेशली तख्ती पे तो उसी से लिखते थे. हाँ, तख्ती पे स्पेशली. हाँ, कॉपी में भी लिखते थे. हाँ, पेपर पे भी लिखते थे. So that was the way it was written. After that, people started using pen, that ink pen, जिसके अंदर वो एक ट्यूब सी होती थी जिसको फिल कर लेते थे, उसके बाद वो थोड़ी देर तक अपने आप चलता था, उसके बाद दोबारा दोबारा से, हाँ, दोबारा से इंक भरते थे. So that was ink pen. I still have one which my boss has gifted to me. So ink pen होता था. My father always used to use ink pen because हमें हमें बचपन में बताया जाता था, पहले तो पेंसिल से लिखना सिखाते थे, उसके बाद जब हम पेन से लिखना शुरू करते थे तो हमें सिर्फ इंक पेन यूज करने दिया जाता था,
because it was believed that ये जो ball point है, ये जो ball pen होता है, इससे handwriting खराब होती है. So we always used to use ink pen in school or colleges. Yes. तो ink pen के लिए आपको ink pot चाहिए होता था. So when he's talking about himself, he's from that era when people used to use ink and ink wala pen. So he says even before, because he's a writer, so whenever he was doing writing, तो वो कुछ लिखने से पहले भी जैसे ही पेन को इंक में डुबोता था तब भी वो थैंक यू बोलता था. आपने पढ़ा है ना वो, कुछ भी करने से पहले वर्क लाइक मैजिक में और अदरवाइज ऑल्सो, कि आप कुछ भी करने लगो तो उससे पहले आप थैंक यू बोलते हो. आप लैपटॉप पे काम करो तो उससे पहले मैजिक टेस्ट कर लो एंड देन स्टार्ट वर्किंग. पढ़ा है ना हमने पिछले चैप्टर्स में. तो Yes. हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप कुछ भी कर रहे, आप में से कितने लोग हैं जो गाड़ी में बैठते हैं और कहीं जा रहे होते हैं और बैठते ही बोलते हैं थैंक यू कि मैं टाइम से पहुंच गया और मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? आई डू इट एवरी टाइम. I also do it. I know Almas also does it. Mm. So I do it all the time. So this is what is it? This is what we are actually practicing magnificent outcome. कि हमने बैठते ही पहले से ही उस चीज के लिए थैंक यू बोल दिए जो हमें चाहिए, जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए. So similarly when he is going, like he says, अगर मैं कोई मैच भी देखने जा रहा हूँ, मान लो आप अपनी टीम को जिताना चाहते हो कि मेरी टीम जीत जाए और आप मैच देखने जा रहे हो, जैसे 2020 की बात हो रही है, तो आप मैच देखने जा रहे हो, अगर और आप मैच देखने जा रहे हो और जाने से पहले ही आप थैंक यू बोल देते हो, यार ये वाला जो वो है ना क्रिकेटर, इसने आज इतने रन बनाए एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एंड यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. सिंपल. यू गोइंग फॉर अ कॉन्सर्ट एंड जाने से पहले आप बोलते हो वाओ आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, आज तो मेरे ही फेवरेट सारे गाने गाए उन्होंने, and I just enjoyed, and it was like a heaven for me. And you already paying gratitude. आप अभी अंदर घुसे भी नहीं हो. So you Yes. can start paying gratitude for each and everything before you start it. सिर्फ खाना खाने से पहले नहीं करने की जरूरत है. आप हर चीज के लिए कर सकते हो. कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसके लिए gratitude दे सकते हो. Seeking magnificent outcome. तो इसको हमने कैसे प्रैक्टिस करना है वो अभी हम अगले पैराग्राफ्स में से पढ़ते हैं. हाँ जी. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Okay. Now, when I logged in and I was waiting for you people to join, and it was past 6 o'clock and nobody had joined. So there was a bit, bit of disappointment which was coming in, seeping in. I immediately remembered, आज का chapter क्या है भाई? आज का chapter है magnificent outcome. So why you getting into that tunnel? Create magnificent outcome. And I immediately started saying thank you for a wonderful session today. And everybody joined. Yeah. So you can start applying it everywhere, wherever you want a good outcome. Yeah. Now, since he's a writer, he wanted good outcome out of his whatever he was writing. So before writing, he used to pay gratitude for that. Yeah. I have even heard that the cricket players or whoever the sports people, they also do self-talk and gratitude before they go on the ground. Yeah, they all do manifestation steps, no? They all Yeah. do this imagination, visualization. Yes. Yeah. And it really helps. It Yes. really helps. I'm telling you a very simple thing. I started learning some yoga from some lady who's trained in Sadhguru's, campus or something. So she was teaching during lockdown. She was teaching me on this thing, Zoom. So she was teaching me something and I was not able to do that. So she just told me, close your eyes and imagine that you're already doing it.
I mean, she was telling me this, and I just closed my eyes, and I felt that it was supposed to be that I'm supposed to be on one leg, and put my other leg on my knee, bend करके knee के साथ support करके मुझे एक leg पे खड़ा होना, मेरा balance ही नहीं बन रहा था. So she says, just imagine, just close your eyes and just visualize it, and then do it. And I did that. It happened. And whenever I'm doing some yoga posture, which I feel, maybe I will not be able to do it, I always visualize it before that. And it works. Every time it works. So all these things are scientific things, proven things, logical things. Yeah. So everybody, people who are aware of it, are using it to get the kind of results they want. Now, since we are learning it, why don't we also use it? हम भी तो कर सकते हैं ना, जब हमको पता चल गया है तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, नेगेटिव थॉट्स तो आने ही है, बिकॉज वो तो हमारा डिफॉल्ट मोड है. क्योंकि बचपन से लेके हमारे उसमें सबसे पहले तो नेगेटिव, हर चीज के लिए नेगेटिव ही आता है. नाउ बिकॉज वी आर इनटू दिस प्रैक्टिस, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको स्विच कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी किया बिफोर द सेशन. I was getting into that, but immediately I switched to magnificent outcome because I knew about it. अगर हमें पता है तो प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा कुछ, सिर्फ पता होने से नहीं मिलेगा. Right? So let's read. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. The law, sorry, yeah, all these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The law of the universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Okay, I really want all of you to just, get this. When I say get this, doesn't mean understand this. Get this means get it into your system. इसको ना absorb कर लो. Because if you are able to absorb this ना, आपको ना कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की और अपने मतलब कभी भी आप लक को लेके ना कंसर्न नहीं होगे. यार मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कल को क्या होने वाला है ना? ये सब बातों पे आपको कभी भी डाउट नहीं होगा. बिकॉज व्हाट इट सेज इज, बट लाइफ डज नॉट हैपन बाय चांस. हम कहते हैं ना, ये चांस की बात है. अब जैसे जो लोग कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए आते हैं, so there was this lady yesterday who was very intelligent, like अमिताभ बच्चन kept on saying, या आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो कितना ज्ञान है and all. She was a coder, like she was a software engineer in some company, and she was sharing that on Aadhaar card, that um, barcode which is there, it's created by her, that barcode scanner or whatever. And she sang very well on the show and all. So he kept on saying that, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, like that. And you know how much money she took back? Only 10,000 rupees. तो आपको लगता है ये चांस था, कि चांस की बात है कि उसको पैसा नहीं मिला? No, somewhere she created it. And on the other hand, there are people who look so जैसे लगते हैं बड़े सिंपल से, इनको क्या आता होगा, मतलब बड़े ही बुद्धू से लगते हैं देखने में, और बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, and they will win 25 lakhs, 50 lakhs, 75 lakhs. How come? How come? Do you think it's by chance? No. और आपको लगता है वो आज लकी था इसलिए वो ले गया? No. It's not by chance. It's not by luck. Then what is it? Because of a stroke of luck? No. The law of the universe operates
mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. अब ये ना बहुत अच्छे से समझने वाली बात है. हमने पढ़ा ना, every action has a opposite and equal reaction, equal and opposite reaction, whatever it is. Yes. Equal. Equal. मैथमेटिकल मेजर है, क्या है? इक्वल. इक्वल वाला साइन होता है ना, Yes. जब हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल वाला साइन. सो इक्वल. सो ये मैथमेटिकल जो है, ये एक मैथमेटिकल चीज है जो हमेशा ही ऑपरेट कर रही है. जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, जितनी डिग्री ऑफ डेप्थ है आपकी ग्रेटिट्यूड में, उतना ही आपको मिलने वाला है. सेम मेजर. इसलिए वो मैथमेटिकल बोल रहा है, बिकॉज इट इज इक्वल टू व्हाट यू आर गिविंग. तो यहाँ पे कोई चांस या बाय लक नहीं है. तो इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, आप ये जितने भी वास्तु वालों के पास और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो ना, you will get it. It is only because of what you are giving. It's your gratitude. वो कहते हैं ना, जो लिखा हुआ वो चेंज नहीं हो सकता. Correct. जो आपने कर्म किए वो भुगतने पड़ेंगे. मानते हैं भुगतने पड़ेंगे. जितने गड्ढे गहरे खोदे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा. बट अगर आप उन गड्ढों को भरते चले जाओगे अपने ग्रेटिट्यूड से, तो अगर वो गड्ढा 10 फुट गहरा था, तो आप 10 फुट गहरे गिरते. और सोचो वो 10 फुट की गहराई पे आपको कितनी तकलीफ होती. और बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फिलिंग योर गड्ढास विद ग्रेटिट्यूड, इट इज जस्ट मे बी थोड़ा सा गहरा रह गया है, और आपका पैर जरा सा उसमें गिरा और आप जरा सा इम्बैलेंस हुआ आपका. वो पॉसिबल है अगर आप अपने गड्ढे भरोगे. कर्म को तो भुगतना ही पड़ेगा, पर कितना भुगतना पड़ेगा वो आपके ग्रेटिट्यूड पे डिपेंड करता है. हम जब मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि आप अगर संगत में बैठते हो तो आपके कर्म कटते हैं. अब ये कर्म कैसे कटते हैं? कहते हैं ना, आपको कहते हैं, आपने सुना होगा, मतलब हमारे पंजाबी में बोलते हैं, मतलब सूली का कंडा बन जाता है. अगर किसी को सूली पे चढ़ाना हो, उसका अगर कर्म ऐसे है कि उसको सूली पे चढ़ना चाहिए, just because that person has been sitting in संगत और वो पॉजिटिव वाइब्स ले रहा है और पॉजिटिविटी में बैठा हुआ है, तो हो सकता है उसको सिर्फ एक कांटा चुभ के ही उसका जो कर्म था वो कट जाए. ये कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है. अब ये कैसे होता है? उसकी कृपा से होता है. अब उसकी कृपा के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रेटिट्यूड देना पड़ता है. तो अगर आप संगत में बैठे हो तो वहां क्या हो रहा है? मास ग्रेटिट्यूड हो रहा है. हो रहा है ना? Yes. अगर आप मंदिर में बैठे हो, अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, अगर आप मंदिर में आरती कर रहे हो या कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो क्या हो रहा है वहां पे? आप उसकी उस्तत कर रहे हो, which is a gratitude. You're paying thank you to God, na? And everybody is doing that together, which is like a mass gratitude. और mass gratitude तो 1000 times हो जाता है. आप अकेले कर रहे हो और जब वहां पे 50 लोग या 100 लोग बैठ के कर रहे हो, उतनी उसकी पावर बढ़ गई ना, क्योंकि सबका मिल गया उसके साथ. That is what is bringing down the enormity of what you were supposed to pay back. जितना आपको अपने कर्म का भुगतान करना था, वो कम कैसे हो गया? वो ग्रेटिट्यूड, मास ग्रेटिट्यूड से हो गया. आप मास ग्रेटिट्यूड कर लो या आप अपने आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड कर लो. करना तो ग्रेटिट्यूड ही है. कटने तो कर्म ग्रेटिट्यूड से ही है. और अगर आपको अपनी लक इंप्रूव करनी है तो उसका भी सिर्फ एक रास्ता है, ग्रेटिट्यूड. आप मंदिर गुरुद्वारे में जाके कर लो ग्रेटिट्यूड, या आप अपनी जिंदगी के हर कदम पे ग्रेटिट्यूड कर लो. चॉइस इज योर्स. हाँ जी, पढ़े.
A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he will keep because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. Okay, pause. हमने पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा? That this is a mathematical thing which is operating all the time. जो ये यूनिवर्स का लॉ है, ये मैथमेटिकली इसका इक्वेशन है और वो हमेशा ही चल रहा है, हमेशा ही काम कर रहा है, क्योंकि लॉ जो यूनिवर्सल लॉ होते हैं वो तो हर टाइम ही काम कर रहे हैं भाई। यूनिवर्स अपने काम से कभी पीछे हटा है? यूनिवर्स ने अपने कभी काम में कहते हैं ना, कोई भी कमी करी है? उसने अपना काम हमेशा करा है पूरा। आपको सांसें दी हैं, हवा हमेशा आपको मिल रही है ना? और उसका उसने सिस्टम बना रखा है भाई। ऑक्सीजन आप लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, फिर पेड़ आपको फिर से रिसाइकिल करके ऑक्सीजन देते हैं। वो सब बना रखा है और वो हर टाइम चल रहा है, अनलेस आप उसमें पंगे लो, अदरवाइज वो चल रहा है सब कुछ। तो यूनिवर्स का जो लॉ है ना, उसके जितनी प्रकृति के नियम है, वो हमेशा ही सटीकता से चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण की बात करें, जब आपको पता है या नहीं पता है, जो कुछ भी गिरना है वो नीचे ही जाना है ना? क्योंकि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा ही खींचेगा, और वो हमेशा ही काम कर रहा है। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो भी एक प्रकृति का नियम है जो हमें नहीं पता था, which was like a secret hidden from us, which is getting revealed to us in this century. And thanks to Rhonda Byrne, which she's made it so open and accessible to people. तो अब वो दूसरा वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आल्सो वर्किंग एट ऑल टाइम्स। और वो मैथमेटिकल है, बिकॉज देखो ये सब जो है साइंटिफिक है। जितने भी लॉज होते हैं, साइंस होती है ना, साइंटिफिक लॉज है। अब ये साइंटिफिक लॉ है तो ये तो हमेशा ही काम कर रहा है। अब आपको पता चल गया कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो इस लॉ की वजह से हो रहा है। कोई लक की वजह से नहीं हो रहा, कोई चांस की वजह से नहीं हो रहा, कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो और वो आपकी जिंदगी में आ रही है। आपको पता है चाहे नहीं पता है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आज है, आपने उनको सबको चीजों को अट्रैक्ट किया है, लोगों को, सर्कमस्टांसेस को आप ही ने अट्रैक्ट किया है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू रियलाइज इट दैट यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? तो अब ये जो लॉ है और जो ये साइंटिफिक लॉ है, ये तो हमेशा ही काम कर रहा है। अब जैसे पायलट है, अब फिजिक्स के लॉ है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उन सबको पता है फिजिक्स के लॉ है, वो हमेशा ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो एक कैलकुलेशन है जो हमेशा ही सही होगी और हमेशा ही चलेगी। अब जो पायलट है, जो फ्लाइट चला रहा है, उसको कभी नहीं सोचना पड़ता कि भाई मेरे जो फिजिकल लॉ है, फिजिक्स का लॉ है, जिसके हिसाब से इसको बनाया गया है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। उसको पता है ये काम करेगा ही करेगा। तो वो डरता डरता फ्लाइट नहीं उड़ाता है कि हाय पता नहीं लैंड करेगी नहीं करेगी, ये बीच में कहीं इधर उधर तो नहीं चली जाएगी, मुझे रास्ता कैसे पता चलेगा। you know he is not worried about all that. I have sat in the cockpit so I know. मतलब मैं तो कॉकपिट में बैठी हूँ, कितनी बार बैठी हूँ। when I was working with SpiceJet and I was managing flight operations, तो सारे pilots मेरे pilots का मैं सारा काम देखती थी। तो I was very pally with pilots, तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करना होता था, I used to sit with them in the cockpit. उसके बाद तो DGC ने मना कर दिया, पर मैंने बहुत टाइम कॉकपिट में बैठा है। And I've seen the way these people perform the flights. I mean, one of our pilots, वो उसने सब कुछ कर दिया, को-पायलट को समझा दिया, उसके बाद he used to sit and read newspaper. उसको कोई चिंता नहीं होती थी कि फ्लाइट सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी, टेढ़ी-मेढ़ी तो नहीं चली जाएगी, because he believes it कि ये तो होना ही है। भाई अगर मैंने कैलकुलेशंस के हिसाब से जो मैंने इसकी प्रोग्रामिंग करनी थी वो मैंने कर दी है, उसके बाद तो ये जाएगा ही जाएगा सही। उसको कोई डर नहीं होता है, right? So similarly, if you know
इसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है आपको पता है ये ऐसे होने वाला, देन यू डोंट हैव टू वरी ना। या हाँ जी पढ़े। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. या सो व्हाट इट सेज इज, अगर आपको किसी चीज में भी आपको जैसा आउटकम चाहिए, आपको अच्छा आउटकम चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें, हम कुछ भी काम करने से पहले प्रे करते हैं ना प्रे, हे भगवान मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, यू नो ये काम अच्छे से हो जाए, rather than ये कहते हुए कि अच्छे से हो जाए, if you start saying थैंक यू मेरा ये काम अच्छे से हो गया, ऑलरेडी हो गया, and feel happy about it. That is what it is talking about in this paragraph. कि आप पहले से ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दो कि ये हो गया, बिकॉज यू नो आउटकम जो है वो किस चीज का रिजल्ट है, आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स का। इतना तो क्लियर है ना सबको कि कुछ भी आउटकम होता है वो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स का ही होता है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आउटकम है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे भी लोग हमारी जिंदगी में हैं, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जो भी हमारे घर का एनवायरनमेंट है, इट इज द आउटकम बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव थॉट एंड फेल्ट अबाउट इट। ये तो क्लियर है ना सबको, राइट? सो सिंस वी नो दिस इज द लॉ विच इज गवर्निंग इट, विच इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा सोचते हो वैसा होता है ना? जैसा सोचते हो, महसूस करते हो, बोलते हो, वैसा होता है। नाउ अगर हमें ये पता है तो हम जो भी काम करने लगे उससे पहले ही उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम दे सकते हैं, उसके लिए हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट आ गया। क्योंकि ग्रैटिट्यूड देना कैसे है? इन द प्रेजेंट मोमेंट, एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। इतना तो हमें समझ है ना इतने सारे चैप्टर्स करने के बाद, तो आपको मैग्निफिसेंट आउटकम में भी वही करना है। हाँ जी। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart. You have to scroll. Or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Okay, pause. So here she's written all the opportunities you can have to pay gratitude before things are happening to get magnificent outcome. आप अपने किसी डॉक्टर को देखने जा रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले कर सकते हैं। आप अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं
आप ब्लड टेस्ट कराने जाने से पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई है ना? सो यू कैन डू दैट. And even if you're buying something new, like I recently bought a new mobile phone. So if you're going to buy a new mobile phone, you can just say, thank you for a magnificent outcome of my mobile. I mean, this mobile is going to be is such a, will have such a wonderful camera and storage. I'm going to just love it. मेरे videos बड़े अच्छे बने हैं इसमें, and people are appreciating the voice quality and everything. So you can just be grateful for it, right? Similarly, आप किसी को मिलने जा रहे हो जिससे आपको डर लगता है. You're going to meet your boss. आपकी appraisal meeting है. So just before going for the meeting, you can pay gratitude for the meeting going well, and you're getting whatever you want. Yeah. And similarly, आप अपनी मदर इन लॉ को मिलने जा रहे हैं. वो एक होता है ना हवा. यार आज तो मुझे अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाना है. पहले से ही आप उसके बारे में एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जो आपको प्लेजेंट नहीं लगती है. Instead of that, you can start paying gratitude for a wonderful time with your mother-in-law. Yeah. And you will be surprised. उस दिन आपके और आपके मदर-इन-लॉ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, आपको ना यार, ये तो कमाल ही हो गया. बट वो कमाल किया किसने? आप ही ने किया, with your gratitude. तो आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो. आप अपने बैंक जा रहे हो, एटीएम जा रहे हो, आप उससे पहले कर सकते हो. किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद रहे हो, शादी की गिफ्ट खरीद रहे हो, उसके लिए कर सकते हो. अपने लिए कोई शॉपिंग कर रहे हो, उसके लिए कर सकते हो. अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे ध्यान आ गया कि कल रात को मेरा टेलर मेरा कुछ सूट देने आया था सिला हुआ. Before he walked in, I knew he was coming. The security guard told me that there is somebody coming to your house. Unless we give approval, they don't allow. So I knew he was coming. I could have paid gratitude for the dress he's made. Things would have been different. When he brought, I tried. I was very annoyed. Because मुझे वैसी फिटिंग चाहिए थी जो मैंने उसको डिजाइन बोला, उसने वो बनाया नहीं. तो अगर मैंने वो किया होता, things would have been different. Now there is a time for me to start applying it. कि अब मैं हर चीज के लिए इसको अप्लाई कर सकती हूँ, even for my tailor's visit. है ना? तो आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, वो आपने देखना है आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे. हाँ जी. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Okay, आपको याद है हमने जब मैजिक डस्ट वाला पढ़ा था, in that Yeah. she had mentioned that I magic dust my computer, I magic dust my daughter's car when she's going back. So you can apply that magic dust also. Magnificent for magnificent outcome, you can जैसे होता है ना, सिंबलाइज कर सकते हो आप उसको. आप जैसे कमरे में जा रहे हो उससे पहले कमरे की तरफ ऐसे मैजिक डस्ट कर दिया and said thank you, thank you, thank you, and then you entered the room for a meeting. So you can start using magic dust also. हाँ जी. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. Okay, pause, For pause. हमारे पूरे दिन में ना बहुत कई चीजें ऐसी होती है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होती कि ये होने वाला है, पर वो हो जाता है ना? तो कहीं ना कहीं हमने ये अट्रैक्ट किया होता है, वो हमें नहीं पता होता. फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे के स्कूल से मैसेज आया कि टीचर ने बुलाया है. तो फर्स्ट थॉट क्या होता है? पता नहीं इसने क्या शरारत करी है, क्या इसकी कंप्लेन आने वाली है. सो दिस इज द फर्स्ट थॉट, क्योंकि हमारे माइंड इज वायर्ड लाइक दैट कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता है तो हमें एक फियर आता है. फियर, अनएक्सपेक्टेड चीज कुछ भी होती है तो हमें एक फियर आ जाता है ना? तो उस फियर को किल करने के लिए इट्स वेरी इजी दैट यू स्टार्ट पेइंग मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटिट्यूड. Instead of getting upset about it or getting worried about it, ये पता नहीं टीचर ने क्यों बुलाया, का इसने कुछ किया होगा, and you start telling your child,
क्या करके आया तू ऑफिस स्कूल में? तेरी मैडम ने बुलाया मुझे, क्या करा बता दे अभी से ही, पहले से ही बता दे मुझे. We start yelling at our children. And instead of that, if you start paying magnificent outcome for that meeting with the teacher, you'll be surprised. Maybe your son or daughter has done something brilliant, and they wanted to congratulate you, acknowledge you for bringing up your child so well. You never know, because unexpected है ना, उसमें तो कुछ भी हो सकता है. पर हम हमेशा वर्स सोचते हैं. हम हमेशा वर्स सोचते हैं बिकॉज वायरिंग ऐसी है हमारे माइंड की वायरिंग ऐसी है इसलिए. बट नाउ हम ये इतने दिन से प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? वी आर रीवायरिंग आवर माइंड. अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं. रीप्रोग्रामिंग इट विद पॉजिटिविटी. जो हम रात को सोते टाइम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि पूरी रात जब हम सो रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्राम हो रहा हो? पॉजिटिव थॉट्स. And we get up in the morning, we write 10 gratitudes. Why do we do that? Because we want that when we start our day also, we start with the positive thoughts. And slowly, when we are completing this whole circle of day and night with positivity, our wiring, our programming in our subconscious mind is getting created of positivity. Yeah, Hanji Pade. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. हाँ, तो उसने बोला ना कि हम लोग हमेशा ही वी जंप टू कंक्लूजन्स के कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ, पता नहीं क्या बोलने वाला है बॉस, है ना? और वो होता क्या है फिर? क्योंकि आपने जो सोचा, आपने जो महसूस किया, वही अट्रैक्ट करेंगे. ये चीज तो क्लियर है ना? अब वो आपने ये सोचा कि कुछ गड़बड़ है, मेरा बॉस पता नहीं किस लिए बुला रहा है, मुझे झाड़ पड़ने वाली है. आपने क्या अट्रैक्ट किया? एग्जैक्टली द सेम सर्कमस्टांसेस, है ना? So you have an opportunity that at that moment you pay gratitude and create a magnificent outcome, and then enter the room, and what will you attract? जिसके लिए भी आपने gratitude दिया, जो आपने सोचा महसूस किया. हाँ जी. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Okay, pause. आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, आपने कोई ट्रेन या बस या कुछ मिस किया और आपको बाद में पता चला कि अच्छा हुआ मैंने मिस किया? Yes, many times it happens that I missed a local train while I was working. एंड I बाद used में to पता travel by the बाद में Yeah. पता चलता है कि उसके साथ कुछ मिसहैप हो गया एंड यू वर सेव्ड. yeah. Or maybe you got an opportunity to travel back in a car with somebody. ट्रेन में ना जाके आपको लिफ्ट मिल गई घर तक जाने के लिए कार में. ऐसा Mhm. कई बार होता है. Yeah. और हम उस टाइम पे ये क्रिप कर रहे होते हैं कि क्यों मिस हो गया. For example, Archana was supposed to be traveling from, I hope you all know Archana. Archana is one of our participants. So Archana was traveling from Amritsar to Delhi by the morning train. That was day before yesterday. And the train was supposed to reach Delhi by 12:30. 12:30. And her next train, which was the connecting train to Calcutta, was at 4 o'clock. So there was a buffer in between. बफर तो था ना Yeah. दोनों ट्रेन्स के बीच में. उसकी पहली ट्रेन होगी लेट, एंड दैट ट्रेन रीच्ड एट 4 o'clock. And when she told me in the morning, we were supposed to be meeting, and then she says, "Ma'am, मेरी ट्रेन लेट हो रही है."
I don't know whether we will be able to meet, but मेरा बहुत मन था मिलने का. So the moment she said कि मेरी train late हो गई है, thought came to my mind, I hope उसकी अगली train भी late हो जाए. कभी भी कोई भी ना चीज coincidence नहीं होती है. Somebody has willed for it. आपने पढ़ा ना पीछे एक चैप्टर में, there are no coincidences, no accidents. Somebody has willed for it. I willed it for her. And when she reached Delhi, I said, उससे पहले इसका कॉल आया, मैम अभी तक हम ट्रेन में ही बैठे हैं. तो मैंने कहा तेरी कलकत्ता वाली ट्रेन का क्या हो? कहती मैम वो भी डिले हो गई है. So I said I knew it. She says how come? I didn't say anything to her. I didn't tell her, I willed it because I didn't want her to miss her train. So I willed it. I hope her उसकी अगली वाली ट्रेन भी डिले हो जाए. Right? And that train left at 8 o'clock in the night instead of 4 o'clock. So कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है. हम बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें Yes. दिखाई नहीं देता. If you miss a train or if you miss a bus, there is something better for you. That is why you missed it. आप मान लो रोज एक ही बस से रोज जाते हो, आपकी चार्टर्ड बस है, आपने चार्टर्ड बस मिस कर दी, and you're feeling कि यार मेरी बस मिस हो गई है, and suddenly one of your colleagues is passing in a car and stops and said, क्या हुआ, बस मिस हो गई, come let's go. और आप बस की जगह गाड़ी में ऑफिस जा रहे हो. It has happened with me when I was working many times. पर हमें उस टाइम ये लगता है यार मिस हो गई. But at that time, if you feel that अच्छा रहा, चलो मिस हुई तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अच्छाई होगी. The moment you say that, there is something better happening. Yeah? हाँ जी. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. So many a times when unexpected things happen and you are thinking कि चलो कुछ अच्छा ही होगा, अगर इसका फोन आ रहा है तो unless you know you're really very negative about that person, most of the times हम फोन उठाते हुए सोचते हैं अच्छा इसका फोन है, एंड मोस्टली अच्छा आज इसका फोन कैसे आ गया, यू नो. तो हम लोग ऐसे सोचते हैं आज इसका फोन कैसे होगा, जरूर कोई काम होगा. सो यू आर क्रिएटिंग व्हाट, नेगेटिव थॉट. और अगर आप फोन उठाते हो बोलते अरे इसका फोन है, लेट मी सी आज क्या है, नो इसका फोन कैसे आया, एंड यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. जब आप हैप्पीनेस के साथ फोन को उठाते हो, दैट मीन्स पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठाते हो, यू विल बी सरप्राइज कि उसमें आपके लिए क्या आया. फॉर एग्जाम्पल, there's this lady जिसके साथ हमने जिम कॉर्बेट का रिट्रीट किया था, and one day she out of the blue she called, and so पहले होता तो शायद मैं बोलती ये क्यों फोन कर रही है, like no, I just happily picked up because I was in a very happy mood at that time, must be doing something, and I said hi, how are you, and then she introduced me to somebody who was sitting with her there. They wanted to invite me as a panelist on launch of their magazine. Can you believe that? Out of the blue, I am on a panel. On एक event हो रहा है where they are launching a magazine which is a southbound magazine. They are launching it in Delhi, and I am one of the panelists.
So she called me to invite me to be the panelist on that. It was because I was in a positive frame of mind and I picked up the phone thinking कि इसका phone आया आज इसका phone आया, let me see, like that, rather than saying इसका phone आया, आज क्यों आ रहा है इसका phone, इसको क्या पड़ी है, क्या बोलने के लिए phone कर रही है. I was not in negative mode, I was in a positive mental frame. तो positive mental frame में मैंने phone उठाया, तो I was given this opportunity to be a panelist. So this is something you can never think about. मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी पैनलिस्ट बन के किसी इवेंट में जा रही हूँ. Yeah, and I was the only woman in the panel. There were around 8 men. कुछ industrialists थे, कुछ politicians थे. I was the only woman in the panel. How did I get this opportunity? Because I was being positive. Now I could have been even better if I could apply this magnificent outcome to that. अगर मैं उठाने से पहले magnificent outcome कर लेती, हो सकता कुछ और भी इससे भी अच्छा हो सकता था, है ना? So now because I know it and you all know it, every time you get unexpected call, उस इंसान से फोन अगर आपको आता है जिसने बहुत टाइम से आपको फोन नहीं किया है, don't doubt it, don't wonder कि क्या है, आज इसका फोन क्यों आ रहा है. आपकी टोन आपकी फीलिंग्स को बताती है, आपके वर्ड्स आपकी फीलिंग्स को बताते हैं. So the moment you receive something unexpected, maybe a mail, maybe a WhatsApp message, maybe an SMS, always be very positive and magnificent outcome के बाद आप उसको खोलो, पढ़ो, and you will be surprised. हाँ जी. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want. Magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at a wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yeah. So if you start practicing gratitude throughout your day for whatever you are doing, even if you say magnificent outcome or you just pay gratitude before doing it, as if it has already happened, the kind of outcome you want, you will start creating that kind of a life. And it will become a habit for you. कि आप हर काम करने से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम को इमेजिन करके पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे. और जब ऐसा करने लग जाओगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? मैग्निफिसेंट आउटकम्स ओनली. आपके पास ऐसे मौके कम होंगे कि जब अनएक्सपेक्टेड चीजें ऐसी हो जो आप नहीं चाहते हो. बिकॉज इवन इफ इट इज अनएक्सपेक्टेड से पहले भी अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो आप उसको मैग्निफिसेंट आउटकम में टर्न कर रहे हो. सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज आज पूरा दिन कुछ भी करने से पहले, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप चाय बना रहे हो, चाहे आप नहाने जा रहे हो, हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू कर दो एंड मेक इट अ हैबिट. And you will enjoy doing it because it lifts your spirit. जितनी बार आप थैंक यू बोलते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, आपकी वाइब्रेशन जो है वो हायर हो जाती है. और जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो उतना आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए. तो ये तो विन विन सिचुएशन है ना. और प्लस आप हमेशा
you feel lighter and you feel happier and joyful. So वही करते हैं ना आज सारा दिन. हाँ जी. Yeah, Almas? At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens through those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to that. For the second step of this magical Okay, practice, pause. Okay, तो आज आपने क्या करना है? 3 ऐसे काम जो आपने आज दिन में करने हैं. जो भी काम कर रहे हो, छोटे मोटे काम हो, बड़े काम हो, जो भी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज किसी से मिलने जाना है, या और मे बी यू आर सपोज टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल टुडे, या और मे बी यू हैव टू गो टू द बैंक टुडे. आपको अपना लॉकर ऑपरेट करना है, मे बी आपको अपने नेबर्स को विजिट करने जाना है, मे बी आपको किसी की दिवाली गिफ्ट रहेगी, उसको दिवाली देने जाना है, कुछ भी हो सकता है. तो यू हैव टू चूज 3 थिंग्स जो आपने आज करनी है. एंड आपने क्या लिखना है? आपने बैठना है, सोचना है उसके बारे में एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड. जिस तरह का भी आप रिजल्ट चाहते हो, ऑब्वियसली आप मैग्निफिसेंट आउटकम ही चाहते हो. यू वांट थिंग्स टू गो वेल. और मे बी इफ यू जस्ट ड्राइविंग अप टू सम प्लेस, मे बी आप, हो सकता है आप मॉल तक जा रहे हो सकता है आप मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, या आप अपने ऑफिस जा रहे हो. तो आप ड्राइव करने से पहले भी उसके बारे में सोच सकते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में. तो आपने ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचना है जो आपने आज करनी है. ठीक है. और करना क्या है? आपने उसके बारे में सोचना है as if it has happened, and then you write what? Thank you for the magnificent outcome to my, like for example, you're driving to your office and you are looking for a smooth and safe drive, right? I always say that. Thank you for the safe and smooth drive to my destination. So you can write thank you for the magnificent outcome to my safe and smooth drive to my work. Yeah. Or maybe thank you for the magnificent outcome to my visit to my aunt's house, or something like that, whatever it is. So you have to write 3 such things which you want to accomplish today, and you want magnificent outcome in that, and you have to just write this. And what is the second step? Let's see. for the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome too. Okay, so you have to choose 3 unexpected things which are going to happen today. बहुत सारी होती रहती है. अचानक कोई फोन आ जाता है, and या कोई मेल आई है, आपने चेक नहीं किया, और just before you open the mail, you say the thank you for the magnificent outcome to this mail, or WhatsApp message, or
somebody is at the door, आप दरवाजा खोलने जा रहे हो, उससे पहले आप बोलते हो thank you for the magnificent outcome to the person at the at the door. It can be for anything. कुछ भी unexpected हो रहा है. अनएक्सपेक्टेड में क्या होगा, कोई आएगा आपके घर में, आपको कॉल आएगी, या आपको कोई मेल आएगी, या आपका कोई कुरियर आएगा, या आपका कोई पैकेट आ गया, आपको कुछ डिलीवर करने के लिए कोई आया और आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, आपको पता ही नहीं आपने कभी कुछ ऑर्डर किया होगा, आप भूल भाल गए, है ना, एंड देन यू सडनली से अरे ये क्या आया है, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग ये क्या आया है, से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम to the amazing courier which has come today. And when you open, you'll be surprised कि आपने कुछ ऑर्डर किया था, वो आया है, और मे बी somebody has sent you a gift, है ना. तो you can apply this on all these things today. तो आपने 3 ऐसे काम जो आप आज करना चाहते हो और आपने करने हैं, उनके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, मेल्स, SMS, व्हाट्सएप, डोरबेल, कुरियर, एनीथिंग. या Yeah. You can't do this magic practice too much, because the more you practice, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practice it today will get you into the idea of it, and in the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yeah. So from now onwards, if you start practicing this today, if you practice this throughout the day today, you will get an idea how it works. And it really works, right? And in future, whenever there's a situation, जहां आपको लगता है हे भगवान ये सब ठीक ठाक हो जाए, हे भगवान ये रिजल्ट ठीक आ जाए, हे भगवान मुझे ये नौकरी मिल जाए, हे भगवान मेरा इंटरव्यू ठीक हो जाए, I just hope this goes well, I just hope this person doesn't behave like that. जहां पर भी आपको ये होप वाला वर्ड आता है ना, वो आप उसको यूज करना बंद कर दोगे, बिकॉज वो होप जो है वो तो सब कुछ क्वेश्चन मार्क है. बट the only thing which really works is the magnificent outcome, because whatever you're thinking and feeling is what you're attracting into your life. So आज की प्रैक्टिस के बाद ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी से समझ आ जाएगी. अच्छा, let's read the practice. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcome. Okay, pause. So first is, of course, you have to write your 10 blessings. Count your blessings, and आपको पता ही है कैसे करना है, आप इतने दिन से कर रहे हैं उसको. आज का क्या है, आज आपको ऐसी 3 चीजें जो आपने आज करनी है और आप चाहते हो कि उसमें अच्छा रिजल्ट आए, उसका आउटकम अच्छा हो. ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए विजुअलाइज कर लीजिए उसको कि वो हो गया है ऑलरेडी, जैसे आप चाहते हो वैसा ही हुआ है, एंड देन यू राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, और वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है. हाँ जी. 3. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for the magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Okay, and after those three things, the other assignment is that you have to do 3 unexpected things के लिए magnificent outcome. अब ये 3 unexpected चीजें कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई आपका neighbor आपसे मिलने आ गया, and you don't know how come they have come. So when they are walking in, just
for a second, close your eyes and say, thank you for the magnificent outcome to this person's visit. And maybe for the phone call, maybe for the SMS, WhatsApp or email. 3 ऐसी चीजों के लिए आपने आज अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए जब भी आप मेल खोले उससे पहले करना है, या आप फोन कॉल को उठा रहे हैं उससे पहले करना है, या आप डोरबेल ऑर्डर कर खोल रहे हो तो उसके लिए करना है। किसी भी 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी आपने मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। कैसे करना है वो बता दिया। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो एंड अच्छा सा फील करते हुए उसके बारे में बोलना, थैंक यू फॉर दी मैग्निफिसेंट आउटकम टू। हाँ जी। 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so last thing, of course, we all know we're supposed to do magic rock practice. और वो क्यों करना है वो मैंने आज बात करी ही है, because it helps us in rewiring our subconscious mind. जो हमारा हमेशा जो instant reaction जो हमारा negative होता है, जो worry का होता है, जो हमेशा कुछ ऐसा होता है कि क्या होने वाला है, उस चीज को हमको रिवायर करना है। उसके लिए हम ये प्रैक्टिस पिछले 20-21 दिन से कर रहे हैं, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें कि वो पॉजिटिव सोचना शुरू करें, है ना। उसी के लिए हम दिन भर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की, उस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में उतारने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉजिटिव रह सकें, है ना। तो वही सब हम कर रहे हैं। So thank you so much, Almas, for reading today's chapter. I would request all of you to please log in time, ताकि हम टाइम से इसको खत्म भी कर पाए, right? So at least 5 मिनट पहले लॉग इन कर लिया करो, 6 बजने में 5 मिनट पे, ताकि हम sharp at 6 o'clock we can start the session, right? So let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say. Okay, so thank you very much. Have a wonderful day. आज तो सैटरडे है, Thank you, ma'am. मस्ती वाला दिन, so have मस्ती also, and मस्ती Yes. करते करते ग्रैटिट्यूड देते रहना। हर काम को करने से पहले मैग्निफिसेंस आउटकम के लिए सोच लेना, ताकि और मस्ती भरा दिन हो जाए, ठीक है। एंड आई विल सी यू टुमारो। ठीक है। बाय। Okay, bye. Bye.